of goods or services or both, but excluding alcoholic liquor for human consumption. And then also we have seen that there are 5 petroleum products, right? Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, petroleum crude and high speed diesel, motor spirit, aviation turbine fuel and natural gas, right? So these 5 petroleum products, they are within the GST, but right now government is not levying any tax on these 5 petroleum products. When the GST council will give recommendations whether they should levy this tax or not, that time they will decide. Okay. Then we have seen on tobacco and tobacco substitutes, GST is also levied, and as well as central excise duty is also levied. On alcoholic liquor, only state excise duty is levied. On 5 petroleum products, excise duty is levied, no GST. But on tobacco and tobacco substitutes, excise duty as well as GST is levied. Okay. Then we went to the definition. It is a GST is levied is a tax on supply of goods or services. So we have seen definition of goods, we have seen definition of services. Yesterday we saw the definition of supply. Okay, now before going to the supply, we have seen other definitions also. What was the first definition? We have seen consideration, right? We have seen consideration. So what do you mean by consideration? Consideration includes something, consideration excludes something. What does consideration includes? Any monetary payment as well as payment made in money or otherwise, as well as monetary value for doing an act or for not doing an act. So monetary value for an act or forbearance of an act. Okay. And what does it exclude? It excludes subsidy given by central government or state government. In that, one important point was about deposit. What was about deposit? Generally, deposits are not to be treated as consideration until and unless supplier applies it for the consideration. We have seen example on all these 3 points. Okay, then we have seen definition of supplier. Who is a supplier? A person who supplies goods or services. He is a supplier, and supplier also includes agent. So any agent who is supplying goods and services on behalf of the supplier, even agent will be considered as supplier. Then we have seen recipient. Who is a recipient? Who is recipient? In that again 2 branches were there. What was the first branch? Where consideration is payable. Come on, everyone unmute. Everyone unmute and revise with me. Come on. This is not my revision. This is your revision. Yes. Unmute. Let the noise come. Let it be. I want to hear everyone's noise. Yes. Come on. Yes. Kritika, Shweta, Nimisha. Yeah. Yes, sir. Yeah. Come on. Everyone are going to revise together. Okay. Yes, Who is there? Sudarshana. Chalo. What is consideration? Who is a recipient? Who is recipient? We have seen there are 2 branches. What is first branch is? Where consideration is payable, where consideration is not payable. Yes, where consideration is payable. At that time, who will be the recipient? The person who pays consideration will be the recipient. Okay, and where consideration is not payable, then who will be the recipient? The person to whom goods are delivered or services are rendered. Okay, so the person to whom goods are delivered or services are rendered. Okay? Okay. Then we have seen that was about recipient. That definition we have seen. Then what else we have seen about definitions? We have seen who is taxable person. Who is a taxable person? A person who is registered or liable to get registered. Okay, a person who is registered or liable to get registered. When will he get liable to get registered? When his turnover will cross the threshold limit. Not everyone is supposed to get registration on GST. There is a threshold limit. Threshold limit मतलब क्या? Turnover limit. कि if your sales is not exceeding this much limit, annually मतलब क्या? From April to March, if your sales is not exceeding this much limit, then there is no need of getting registration on GST. So there is a threshold limit. So once a person crosses the threshold limit, he gets liable for registration. Okay, he gets liable for registration. बाद में वो अप्लाई करेगा, फिर उसको थोड़े टाइम में registration मिलेगा. That is a different part. But the day he crosses the 20 lakhs का turnover, he gets liable for registration. Okay. Then we have seen supply. Now supply is defined under section 7. Supply is defined under section 7. So in that there are 5 branches. Okay. There is a section 7 subsection 1 clause A. There is a section 7 subsection 1 clause B. There is schedule 1, schedule 2 and schedule 3. Yes. Then section 7 subsection 1 clause A. What does that say?
Section 7. Supply with consideration. What does it say? That is supply with consideration. In that there are 3 elements. What are those 3 elements? Yes, Tarun. What are the 3 elements? Yes, there should be now sale. It can be in any form. Sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, deposit. Okay, it can be in any form. That sale can be in any form. Next, what was the second important element? There should be a consideration. It should be with consideration. Without consideration रहेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे. क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? Yes, Kritika, were you there yesterday? Kritika, Pooja. Okay. Yeah. So what was the example given yesterday? Who is remembering? Without consideration, with consideration, without consideration रहेगा तो. I have given the example of mobile phone. I am having a mobile phone. मैंने कल ही purchase किया. If that mobile phone I am giving it to my brother, okay, without consideration, then it will not be treated as supply. दूसरा example क्या था अपना? Free gifts वाला. Companies जो samples distribute करती है as free gifts. Okay, so free gifts distribute करती है. That means it is without consideration. Since it is without consideration, it is not treated as supply. And if it is not supply, then no GST. If it is supply, then it is GST. Okay. Then second important element was consideration. And what was the third important element? In course or furtherance of business. It should be in course or furtherance of business. Okay. Now I am having a mobile phone. I am giving it to my brother, and my brother is giving me 15,000 rupees for that phone. Okay. So there was a supply, like there was a transfer of ownership. So ownership got transferred, title got transferred to my brother. It means there is a sale. Then he has given me 15,000 rupees. So there was a consideration. But which element was missing here? It was not in course or furtherance of business. Is my business to sell mobile phone? No. What is my business? I am teaching you. My profession is teaching. But that was not in course or furtherance of business. तो इसलिए मैंने जो उसको मोबाइल फ़ोन दिया उसके ऊपर मुझे GST भरने का ज़रूरत नहीं है. But on the contrary, if I am having a mobile shop, and in my mobile shop, if my brother comes and he purchases mobile and he gives me 15,000 rupees and I am giving him mobile, then वो क्या हो गया? That sale हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया, एंड दैट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसलिए वहां पे क्या लगेगा? दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड उसके ऊपर GST लगेगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yeah. Next, what we did, that this was about section 7 subsection 1 clause A. Then we did section 7 subsection 1 clause B. What does it says? Import with consideration whether or not for business it will be regarded as supply. ठीक है. ये import के लिए हम लोग ने लास्ट में एक मस्त बड़ा वाला चार्ट किया था. क्या था उसके अंदर? Import with consideration, without consideration. With consideration है, if there is a consideration, then वो business के related हो या business के related ना हो, it will be treated as supply. But if it is without consideration, then it should be from related or distinct person plus in course or furtherance of business, then only it will be treated as supply. Otherwise, it is not supply. ठीक है. Then we went to schedule 1. What does schedule 1 says? Supply without consideration. What does our law says? That for supply there should be consideration. But government has given certain exceptions in schedule 1. How many transactions are there? 4 transactions. तो गवर्नमेंट हैज गिवन सर्टन एक्सेप्शंस कि ठीक है ये 4 ट्रांजेक्शंस है, इसमें अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा देन ऑल्सो वी विल ट्रीट इट एज सप्लाई. ओके. सो व्हाट वाज द फर्स्ट वन? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट. ओके. So where ITC has been availed on such asset, we have seen example of that. Then second one was it was between principal and agent. So transfer between principal and agent. Whatever transfer happens, transfer of goods. Okay, transfer of goods between principal and agent, it will be regarded as transfer. Even though it is without consideration. Even though it is without consideration, it will be regarded as transfer. Okay. Next, it was supply of goods or services. Yes. In course or furtherance of business. In course or furtherance of business between related or distinct person. In course or furtherance of business मतलब related and distinct person तो रहेगा ही, उनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो चलेगा. विदाउट कंसिडरेशन रहेगा वो भी चलेगा, बट इट शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अगेन वी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ माय ब्रदर. ओके. नाउ I am in teaching profession. ठीक है. My brother came at my home. I had a spare new mobile phone. I gave him, and since he is my brother, he did not pay any money to me. Okay. So there is no consideration.
फर्स्ट एलिमेंट इज देयर, सप्लाई वाला एलिमेंट इज देयर, सेकेंड इज नो कंसिडरेशन, बट हियर थर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो नॉट देयर, दैट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज माई प्रोफेशन इज टीचिंग, सो दैट वॉज जस्ट अ कैजुअल गिफ्ट, तो दैट्स वाई वो क्या रहेगा, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ मोबाइल शॉप, my brother is coming at my shop, he is purchasing mobile phone, and since he is my brother, I am not taking any money from him, I am telling कि चल ठीक है, I don't want money, he is telling me I will not give you any money, so he purchases mobile phone from my shop without consideration, ठीक है, he is related person to me. Second, it is without consideration, and third, that was in course or furtherance of business. I had the business of selling mobile phone, and that's why I have sold mobile phone to him in my course of business, but without consideration. So government says that if you are supplying any goods or services to your related person without consideration, but in course or furtherance of business, then we will treat it as supply. ऐसे तो क्या होएगा, मेरे दुकान में जितने भी लोग मोबाइल खरीदने आएंगे, मैं सबको मोबाइल लूंगी, कंसिडरेशन जो भी रहेगा वो मैं कैश में ले लूंगी और बोलूंगी कि मैंने सब मोबाइल फोन्स मेरे रिलेटिव्स को ट्रांसफर किए, एंड आई विल नॉट शो एनी सेल्स. ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि दैट शुड बी इन कोर्स, और इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है, इवन तो आपने फ्री में दिया है, बट फिर भी हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, दिस सप्लाई ट्रीट करेंगे. ओके, then in that we have seen who is a related person, we have seen the definitions of related person. Who all are related person? Officers or directors. Officers or directors of each other company. A लिमिटेड में A था, B लिमिटेड में B था, वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में क्या हो गए, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए. So A लिमिटेड and B लिमिटेड will become the related person. Then we have seen employer and employee भी था, but employer employee में क्या एक एक्सेप्शन था, employer employee को क्या दे सकता है, गिफ्ट्स दे सकता है, विदाउट कंसिडरेशन क्या दे सकता है, गिफ्ट्स दे सकता है. बट इफ दैट गिफ्ट्स इज वैल्यू अप टू ₹50,000, देन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई. नॉट सप्लाई तो क्या, नो GST, बट वैल्यू इज मोर देन 50,000, तो वो क्या ट्रीट हो जाएगा, सप्लाई. एंड किसको GST भरना पड़ेगा, सप्लायर विल हैव टू पे GST. इज दैट क्लियर? Yes. Next we have seen holding and subsidiary वाले transactions. One holds another company directly, both are holding third company, या फिर one company is hold together by another company. All those will be related persons. Then for individual, who is for partnership firm, who is related person, partner. So if partnership firm is selling any goods or services to partner, then it will be treated as supply. Then we have seen for individual, who is this related person for individual, spouse and children. Spouse and children are related as brother, sister, parents, grandparents, only if they are dependent on the individual. Yeah. Then we have seen distinct person. In distinct person क्या था, where establishments are registered differently but under same PAN. For example, DMart in Mumbai and DMart in Surat. तो DMart is in Mumbai, तो उसको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सूरत में भी DMart है, तो वहाँ पे भी अलग रजिस्ट्रेशन, बिकॉज GST रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज मिलता है, हर स्टेट में अपने आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. तो DMart in Mumbai and DMart in Gujarat, they will have different registration number, but it is DMart limited. तो वो केस में क्या आएगा, उनका क्या रहेगा, PAN number will remain same. Okay, PAN number will be same, only their registration, GST registration will be different. So these are called as establishments under same PAN. So when there are establishments under same PAN, they will be treated as डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एंड उनके बीच में भी अगर कुछ भी सप्लाई हुआ विदाउट कंसिडरेशन, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर GST एंड इट विल बी लायबल फॉर GST. इज दैट क्लियर? Yes. Then what we did after this, import of service. तो import of service के अंदर we have done that chart, ठीक है. तो import of service के केस में क्या आएगा, अगेन विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन. विथ कंसिडरेशन है, देन आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या ना हो. इसमें एग्जांपल दिया था, क्या रहेगा एग्जांपल, जो A लिमिटेड था फॉर एग्जांपल, that was importing, team professionals were importing interior designing service for their classes, so they are importing service for their business. तो वो केस में क्या हो जाएगा, there is consideration and it is for business, तो वो क्या हो जाएगा, it will be treated as supply. But for example, B limited is importing service without consideration, with consideration है, and it is importing interior design for its bungalow. तो बंगलो क्या हो गया, पर्सनल यूज. बट सिंस कंसिडरेशन वॉज इन्वॉल्व, मतलब he has paid 1 lakh rupees to that interior designer in Sydney, तो वो केस के अंदर क्या हो जाएगा, it will be treated as supply, even though without consideration है फिर भी. दैट वॉज विथ कंसिडरेशन. ओके, अगर विदाउट रहेगा तो देखने का रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए.
ठीक है. Any doubts in yesterday's lecture? No, ma'am. Yeah. Sure. No, ma'am. Yeah. That was about schedule 1. Okay, that was about schedule 1. Next we go for schedule 2. What is schedule 2? Supply of either goods or services. What is schedule 2? It is supply Supply of either goods or services. supply of either goods or services. ठीक है, चलो. Has everyone got the PDF? Has ma'am shared the PDF, right? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So supply of either goods or services. So now in schedule 2 there are various activities. There are many such activities which are given in schedule 2. And in schedule 2 जो भी activities दिया है, whatever transactions are given, they are either supply of goods or supply of services. Either supply of goods or supply of services. Come on, tell me. If it is a supply of goods, so is it liable for GST? Yes. If it is a supply of goods, is it liable for GST? Very good. It is liable for GST. If it is supply of services, is it liable for GST? Yes, ma'am. Yes, it is liable for GST because it is a supply services, supply of goods. ठीक है, तो GST का क्या बोलता है? It is a tax on supply of goods or services. Goods or services. ठीक है, तो this schedule 2 has given us certain transactions which are supply of goods or which are supply of services. तो schedule 2 में जितने भी activities है, are they taxable or are they not taxable? Taxable. They are taxable. Very good, Sakshi. They are taxable. ओके, तो शेड्यूल 2 में जितने भी एक्टिविटीज है दे आर ऑल टैक्सेबल. तो शेड्यूल 2 इज गिविंग अस अ लिस्ट वेर इट इज ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड इट इज टैक्सेबल. ओके, is that clear everyone? So this list is given in your PDF. Okay, everyone in your notebook write here refer from PDF. Okay, you just have to very common activities are given there. You have to refer the PDF and you have to go through it twice or thrice. You will remember the activities. Okay, so we move on to the PDF. Everyone. Yes, see here there are certain, here is a list given where transactions are classified as either treated as goods or it is treated as services. Is everyone paying attention? Yes, ma'am. Yeah. ओके, सो सी फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट टाइटल क्या दिया है, इट इज अ ट्रांसफर. नाउ फर्स्ट द लिस्ट इज गिवन फॉर गुड्स. ओके, सो व्हाट इज गिवन फॉर गुड्स? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, transfer of title in goods, that is transfer of title of television. It means that whenever you are transferring television, for example you went to Vijay Sales and you purchased the television. Now when you are purchasing television, the title of television got transferred to you, तो उसको हम क्या बोलेंगे? It will be a transfer of goods, it will be a supply of goods. ठीक है, whenever you are purchasing any television, whenever you are purchasing any mobile phone, you are purchasing a car, in what happens in that case, the title from the supplier gets transferred to the title of recipient. So when the title is transferred of goods, it will be treated as supply of goods. Okay, next क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास्ड एट अ फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन. एग्जाम्पल, कार परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स, योर हायर परचेज ट्रांजेक्शंस. व्हाट हैपेंस इन हायर परचेज?
You enter into an agreement. We went to Vijay Sales. We purchased a television for hire purchase. ठीक है? That is in installments. So when the title will get transferred, when your last installment is paid. ठीक है? Fully paid. But it is paid at the future date. But even though it is paid at the future date, now it will be considered as supply of goods. Okay, today it will be considered. It will be as good as that Vijay Sales have transferred the title of goods to you. It for Vijay Sales, who is supplier here? Vijay Sales, and we are the recipient. So supplier has supplied goods to the recipient. Okay. Next, transfer of business assets. What is business assets? Now permanent transfer or disposal of goods forming part of a business assets by or under the directions of person carrying on the business. Now whoever is doing business, for example, I had a refrigerator and if it is defective and I am selling it at a low price. Okay, we are selling it at a low price, even though it is without consideration. If there is consideration or if there is no consideration, it will be regarded as supply of goods. ठीक है? And here we are talking about business assets. Business assets मतलब क्या? The assets which are used in your business, your capital assets here we are talking about. Next, any goods forming a part of business assets will be deemed to be transferred in furtherance of business before any person ceases to be a taxable person. For example, see, example, there was a sole proprietor. Okay, any goods will be deemed to be transferred. There was a sole proprietor. Okay, there was a Mr. A who had a shop. ठीक है, there was a Mr. A who had a shop. Now Mr. A, this was in a going concern. This was going concern. But now Mr. A has transferred his business. He has transferred his whole shop to Mr. B. तो उसने पूरा अपना शॉप ट्रांसफर कर दिया है. तो whatever goods are there with Mr. A, it will be as good as that Mr. A has supplied those goods also. Mr. A has supplied those goods also. Okay, but where it is a going concern, in case of the going concern, so this is an exception where he is transferring business as a going concern to Mr. B, then this supply will not be regarded as supply. This supply will not be regarded as supply. But for example, there is Mr. A, he had a shop of say mobile phones. ठीक है, now due to lockdown उसका बहुत loss हो गया. He has to face a loss. That's why now his closure. There is a closure of his business. There is a closure of his business. Now since there is a closure of his business, he is supplying. तो जो भी now he thought that now there is no use of running a business, so he thought to close his business. तो close his business तो जो भी उसके पास stock था, capital asset था, उसके दुकान में AC वगैरह रहेगा. He had AC, he had computer in his shop as his business assets. Now he is closing down his business. So he sold out AC also and he sold out computer also. To whom? To Mr. B. ठीक है? तो in that case this will be treated as supply. ठीक है, this will be treated as supply. So he is transferring his business assets to another person. He is transferring his business assets to another person. But in this case, what is exception? Going concern is exception. Where a business is already going concern, and if you are supplying the business, if you are supplying the whole business, and where you are selling goods or services to another person, this will not be regarded as transfer. So this will not be regarded as supply. This will be treated as supply. Okay. That means whole business transfer would not be considered as supply. Until and unless it is a going concern. If it is a going concern, for example, we take the example of yesterday's example, Jethalal and Tappu. What happened? For example, Jethalal, who is the owner of that electronic shop, Jethalal. Now Jethalal is transferring his business to Tappu. In that case, it will not be regarded as this supply, because that is already a going concern. The business is running. Okay, supply of goods नहीं treat किया जाएगा वो. ओके, बट अगर क्लोजर हो रहा है बिजनेस का, बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न एंड यू आर क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस एंड देन यू आर सेलिंग योर बिजनेस एसेट्स, एसी, कंप्यूटर, यू आर क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस एंड आपने एसी निकाल दिया, आपने कंप्यूटर निकाल दिया, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. जैसे कि आप एसी बेच रहे हो या कंप्यूटर बेच रहे हो, ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. If suppose business is closed down,
and Yeah. then it is transferring that business, that name of the business, and so that it could be considered as GST or not? नो नो, अगर बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है लेकिन हम जो टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं वो केस के अंदर, ठीक है, तो बिजनेस अगर क्लोज डाउन हो गया तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है, लेकिन आप जो उसको नाम ट्रांसफर कर रहे हो तो इट इज एज गुड एज गोइंग कंसर्न, बिकॉज अगेन दैट पर्सन इज गोइंग टू रन बिजनेस ऑन दैट नेम ओनली. It could be supplied then. या तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई बिकॉज वो गोइंग कंसर्न ही हो गया. मेरा बिजनेस बंद होने आ रहा है, ठीक है, एंड मैं अपना जो नाम रहेगा वो किसी और को दे रही हूँ, तो वो भी तो वही नाम चलाने वाला है ना, तो वो तो गोइंग कंसर्न ही हो गया. मेरा बिजनेस बंद कहाँ पे हुआ? आई एम नॉट रनिंग, समवन एल्स इज रनिंग, बट इट इज एज गुड एज गोइंग कंसर्न. यहाँ पे बात हो रही है कि योर बिजनेस इज ओनली कम्प्लीटली ऑफ, यू आर क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस एंड देन यू आर सेलिंग योर बिजनेस एसेट्स. ओके, कंटिन्यू रन करेंगे अगर कोई किसी अपने, तो वो हमें और जो नहीं यस, कंटिन्यू रन करेंगे तो आई डेंट गेट यू. आपने भी बताया ना कि आपने जो एक, अगर हम किसी बिजनेस करते बिजनेस को किसी और को देते हैं जैसे वो चलाता है आगे, और एक आता है कि जो बिजनेस ऑफ हो जाए, मतलब क्लोज कर रहे हैं, इसलिए आपने क्लोज करने की जो हमारा मटेरियल है उसे हम निकाल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे मैम? ये जो है ना, ये जो गोइंग कंसर्न है, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो बेच रही हूँ एक गोइंग कंसर्न था. गोइंग कंसर्न मतलब मेरा बिजनेस अभी भी चालू है, मेरे बिजनेस के अंदर मोबाइल फोन्स पड़े हैं, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर एसी, मेरे दुकान के अंदर एसी लगा हुआ है, मेरे दुकान के अंदर कंप्यूटर अभी भी है, नॉर्मली मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने ये बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया. किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर बी को. गोइंग कंसर्न अच्छा खासा चल रहा था और मैंने वो बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर बी को. तो ये जो है ना, ये जो अभी मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया, मतलब क्या हो गया? अब सिर्फ बिजनेस नहीं ट्रांसफर करूंगी ना, मेरे दुकान के अंदर जो भी माल वगैरह रहेगा वो सब भी मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगी. दुकान के अंदर एसी लगा रहेगा, वो थोड़ी ना मैं निकाल के घर पे लेके जाऊंगी, वो भी वहीं पे रहेगा. दुकान में कंप्यूटर भी वहीं पे रहेगा. तो लेकिन अभी वो कौन यूज करेगा? मिस्टर बी यूज करेगा. तो जब मैं मेरा बिजनेस उसको बेचूंगी, जब उसका वैल्यूएशन निकालूंगी, तो ऑब्वियसली एसी और कंप्यूटर का भी तो वैल्यूएशन उसमें ऐड करूंगी, राइट? तो वो इसका मतलब कि आई एम सेलिंग एसी एंड कंप्यूटर टू देम. अभी वो टाइटल किसका हो गया? एसी एंड कंप्यूटर का, मिस्टर बी का, बट स्टिल इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. Even if it is done with a consideration? Yes, even if it is done with a consideration, it will not be treated as supply because we have transferred it as a going concern. ठीक है, तो अब एसी और कंप्यूटर मिस्टर बी यूज कर रहे हैं तो भी वो सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा बिकॉज मैंने एज अ गोइंग कंसर्न उनको बेचा है. ओके, लेकिन दूसरे जगह पे समझो मेरा मोबाइल का शॉप बंद हो गया, आई एम नॉट रनिंग इट प्रॉपरली, मेरा दुकान ही बंद हो गया पूरा, तो जो भी मेरे दुकान के अंदर माल था वो सब मैंने बेचने को निकाला. अभी मैं एसी मिस्टर बी को बेच रही हूँ और अभी मैं कंप्यूटर मिस्टर बी को बेच रही हूँ, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. ओके, फिर वहां पे वेदर इट इज विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, मैं भले मिस्टर बी को फोकट में दे दूं या फिर पैसा लेके दूं, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यस मैम. Yeah. Next, the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. Again, same this going concern वाला ही point है इसमें. Okay. Next, supply by unincorporated association. Supply of goods by unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. अब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कौन रहते हैं? मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं रहते, जैसे क्लब्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गए, ट्रस्ट हो गए, वो सब क्या हो जाता है? अगर समझो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है लेकिन फिर भी अगर कुछ सोसाइटीज़ जो रहती है, सपोज देयर आर सर्टन सोसाइटीज़ एंड आपका जो सोसाइटी है वो सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड दैट सोसाइटी हैज़ परचेस्ड अ ट्रैक्टर. Okay, that society has purchased a tractor. Now there is one farmer in that society which is in need of that tractor. That farmer wants to purchase that tractor. So cooperative society thought that they would sell this, they would transfer this tractor to that farmer. तो वो भी क्या ट्रीट किया जाएगा? Supply of goods ट्रीट किया जाएगा. Okay, so whatever supply by unincorporated association to its members, it will be treated as goods. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट गुड्स. तो किसको किसको गुड्स ट्रीट किया जाएगा? वे ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज इन गुड्स, देन अंडर एग्रीमेंट वेदर यू आर ट्रांसफरिंग टाइटल ऑन द स्पॉट और टाइटल इज ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इट वाज इफ यू आर ट्रांसफरिंग योर बिजनेस एसेट्स. बिजनेस एसेट्स मतलब क्या? योर कैपिटल एसेट्स ऑफ योर बिजनेस.
इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. उसमें सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, गोइंग कंसर्न एंड इफ इट इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट इज सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इफ देयर इज एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह है, इफ दे आर ट्रांसफरिंग एनी एसेट इन द सोसाइटीज टू अनदर पर्सन देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज. किसको इसको सर्विसेज मानेंगे, वे ट्रांसफर एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स. ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल. एग्जाम्पल देखो दिया है नीचे, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज अ जनरेटर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. ट्रांसफरिंग राइट्स विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. तो जहां पे मैं अगर पूरा का पूरा जनरेटर बेच देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, टाइटल बेच दिया, तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स. But here I am giving generator to use it for 2 months and then I will get back that generator. Okay, so here I am this giving generator only for the use. I am not transferring the title. तो सिर्फ use के लिए दिया, जहाँ पे right is this title is transferred only for the use, it will be treated as supply of service. Understood? Next is land and building. What is land and building? Any lease. If you are giving any asset or land, जो भी land रहता है, घर आप रेंट पे देते हो, लेकिन जो लैंड जो जमीन रहती है वो आप लीज पे देते हो. सो इफ यू आर गिविंग दिस लैंड ऑन लीज, तो क्या जिसको आप लीज पे देते हो वो लैंड उसका हो जाता है क्या? नो, टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, वी आर जस्ट गिविंग टू यूज द प्रॉपर्टी. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस. Okay, any lease, tenancy, easement, license to occupy land, any you are giving it on rent for use, तो उसको हम क्या बोलेंगे, it is a supply of service. Any lease or letting out of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce either wholly or partly. So wherever you are leasing और लेटिंग आउट एनी बिल्डिंग, ठीक है, अगर पूरा बिल्डिंग दे दिया, कॉम्प्लेक्स दे दिया, फॉर एनी पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस, किसी को रहने को दे दिया, आप किसी को घर रेंट पे देते हो, इट इज ऑल्सो एज गुड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, जो रेंट रहता है मुंबई में जनरली जो साउथ बॉम्बे वगैरह है वहाँ पे रेंट फॉर पर मंथ इज अराउंड 1 lakhs 2 lakhs. 2 lakhs बहुत जगह पे 2 lakhs इज द रेंट. जो बड़े बड़े घर रहते हैं वहाँ पे 2 lakhs इज द रेंट. तो 12 महीने का कितना हो गया, 2 lakhs into 12, 24 lakhs. 24 lakhs is crossing the threshold limit of 20 lakhs. Then that person is liable for GST. ठीक है, मतलब for example, Mr. A, he is having house. He has given on rent. ठीक है, to Mr. B. ठीक है, somewhere in say वर्ली. ओके, वर्ली में उसका घर है Mr. A का, उसने कहाँ पे दिया है उसको, रेंट पे दिया है मिस्टर बी को. हु इज द सप्लायर हियर, मिस्टर ए इज द सप्लायर, ही इज गिविंग सर्विस ना ऑफ रेंट एंड मिस्टर बी इज द रेसिपिएंट. तो इनका जो रेंट है दैट इज 2 lakhs पर मंथ. 2 lakhs पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12 into 20, 24 lakhs. ठीक है, विच इज मोर देन 20 lakhs. सो इफ इट इज मोर देन 20 lakhs देन सप्लायर ही इज लायबल टू पे GST. ठीक है, तो क्यों ये लायबल हुआ, बिकॉज ये जो सर्विस दे रहा है वो क्या है, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, तो GST के अंदर इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. सिंस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस इट इज लायबल फॉर GST. लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 lakhs के जगह पे अगर 1 lakh रहता था तो क्या हो जाता था, 12 into 1 lakhs दैट इज कितना हो जाता था, 12 lakhs हो जाता था. दिस इज लेस देन 20 lakhs. ठीक है, तो दिस सर्विस इज टैक्सेबल, लेकिन उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसको GST का जरूरत नहीं है. ठीक है, बट सर्विस इज टैक्सेबल. जैसे ही वो अपना रेंट बढ़ा देगा, 20 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, ही विल बिकम लायबल फॉर GST. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? यस. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट और प्रोसेस. नाउ ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब क्या, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स. अनदर पर्सन्स गुड्स मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी मशीनरी है, वो मशीनरी आपने किसी और पर्सन को दिया जस्ट फॉर प्रोसेस. जस्ट फॉर प्रोसेस मतलब ऑयलिंग हो गया, ठीक है, कुछ रिपेयरिंग करने का हो गया, वो जो आपने उसको दिया तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा.
ठीक है, मतलब दैट पर्सन इज रिटर्निंग अस बैक मशीनरी आफ्टर ऑयलिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग. तो मशीनरी तो अपना ही था, हमने उसको दिया था फॉर प्रोसेसिंग, फॉर ट्रीटमेंट, एंड देन इट इज गिविंग अस. अपने घर पे एसी रहता है, वो एसी का हम लोग सर्विसिंग करवाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, इट इज अ ट्रीटमेंट, इट इज अ प्रोसेस विच दे कम एंड डू ऑन अवर गुड्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. तो जो एसी सर्विसिंग वाले जो अपने को प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, any treatment or process which is applied to another person's good. ठीक है, you are applying treatment or process to another person's good. A is manufacturer send goods for special packaging to be on job work activity. job work activity मतलब क्या, कि जितना वो पैकेजिंग करेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट होगा, जितना वो पैकेजिंग करेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट होगा. तो वो क्या कर रहा है, वो कौन सा सर्विस दे रहा है, सिर्फ पैकेजिंग का सर्विस दे रहा है. ए ने बी को गुड्स भेजा फॉर व्हाट पर्पस, ओनली फॉर पैकिंग पर्पस. ठीक है, अभी जैसे अमेजोन का पकड़ लो, हम लोग का जो अमेजोन के पार्सल्स रहते हैं, एवरी पार्सल हैज दैट अमेजोन का लेबल वाला बॉक्स. ठीक है, सो दैट इज अ पैकेजिंग प्रोसेस. सो इफ दे हैव आउटसोर्स दैट प्रोसेस, इन दैट केस जो भी पर्सन वो पैकेजिंग का सर्विस देता है, इट इज कंसिडर्ड एज दैट पर्सन इज गिविंग सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, मतलब हिज सर्विस इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी. टैक्सेबल अंडर जीएसटी मतलब क्या, वो जो भी सर्विस दे रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो टर्नओवर से एक्सीड हो गया तो. ओके, next, special packing by B shall be treated as supply of service. It shall be immaterial whether B uses his own packing material or the same is provided by A. packing material कौन सा सप्लाई कर रहा है, that is not important. packing service is important. जो भी वो packing दे रहा है, that is considered as good as service. Okay. Next is transfer of business asset, where by or the under the direction of a person carrying on a business, goods held assets or used for the purpose of business are put for any private use or made available to any person for any use other than for the purpose of business at the direction of the person carrying on the business. ठीक है, इसका मस्त एग्जाम्पल दिया है, नीचे पढ़ो. A deals in home appliances. A deals in home appliances, takes one of his computer used in business to home and to be used by his son for his studies during the month of January, and thereafter computer should be brought back. इसमें क्या हो रहा है कि ए के पास अपने बिजनेस एसेट्स है, ए ने वो बिजनेस एसेट्स किसी और को रेंट पे दिया. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, खुद के घर पे लेके जा रहा है कंप्यूटर, वो खुद के घर पे लेके गया for studies of his son. His son will use that computer and then he will return back computer to his father. Okay, then the computer will be brought back to the shop. तो वो केस क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, सी यू ऑल नो, जैसे कि वी हैव सीन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो वो जेसीपी रहते हैं, ठीक है, जो जेसीपी, द जेसीपीज विच वर्क देयर. ओके, डज द बिल्डर ओन्स दैट जेसीपी, डज द बिल्डर ओन्स दैट जेसीपी, वो जेसीपी बिल्डर का रहता है क्या, नो, बिल्डर टेक्स द सर्विस ऑफ दैट जेसीपी. सो देयर इज अ कंपनी, for example there is XYZ Limited, there is one company, he is having 10 JCBs, जो भी उसके ट्रैक्टर्स या जो भी रहेंगे से 10 JCBs and 10 tractors. Okay, 10 JCBs and 10 tractors. Now he XYZ is owning this. Now there is one builder, say there is Lodha Builders. Okay, now they want to start their construction site. So obviously no builder owns the tractors or JCBs. Okay, no one owns that. They take on rent. Whenever their construction starts, they take on rent. तो लोढ़ा बिल्डर्स क्या करेगा, इनके पास से लोढ़ा बिल्डर्स विल टेक वन से ट्रैक्टर एंड वन JCB. ठीक है, ये लोग ने इसको ट्रांसफर किया. ओके, अब जब ये लोग ने लिया तो क्या ये ट्रैक्टर और जेसीबी लोढ़ा बिल्डर्स के हो गए क्या, नहीं, दे आर यूजिंग दिस एंड आफ्टर द यूज इज ओवर, से आफ्टर 2 months, they will return this tractor and JCB to XYZ Limited. So they have transferred their business asset. They have transferred their business asset to another person, to Lodha Builders, and they are using that asset and they are returning back. तो ये भी क्या हो गया, it is treated as supply of service. I hope it is clear. Yes. Yes, sir.
Next is immovable property. Now renting of immovable property. Which are immovable property? Land and building. So if you are giving immovable property on rent, दिस इज टॉकिंग अबाउट रेंट. ओके, तो अगर आप कुछ भी लैंड या बिल्डिंग रेंट पे देते हो तो वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. लेकिन अगर ट्रांसफर किया, टाइटल ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स. लेकिन राइट्स टू यूज ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन और सेल. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. So wherever it is giving, there are architectures, there are builders. So the builders which are giving services of construction, ठीक है, वो property किसी और का है. कितना हम everyone knows that there is a redevelopment process. तो जो भी redevelopment होता है, for example land अपना है, ठीक है, नाउ द बिल्डर इज कमिंग एंड इट इज गिविंग अस कंस्ट्रक्शन सर्विस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑल यू हैव हर्ड सीसी रहता है. सीसी मिल गया, एवरीवन सेज कि सोसाइटी का सीसी मिल गया, सोसाइटी का ओसी मिल गया. तो वो क्या रहता है? गवर्नमेंट व्हेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटली, गवर्नमेंट गिव्स द कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू द बिल्डर कि ओके दिस बिल्डिंग इज नाउ कंप्लीटेड इन ऑल पार्ट्स. तो उसके बाद जो भी सेल होगा दैट विल बी नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, वो सीसी, गवर्नमेंट का सीसी मिलने के पहले तक जो भी रहेगा दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस. वंस द सीसी इज इशूड, आफ्टर दैट इट इज नॉट अ सप्लाई. ओके, यस, व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट बिकम्स आफ्टर दैट इट विल बिकम सप्लाई ऑफ गुड्स, कि वो जो भी उसका स्टॉक रहेगा वो बिल्डर का क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा. तो सीसी मिलने के बाद जो वो बेचेगा, घर बेचेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ. सीसी मिल गया मतलब क्या मिल गया? योर बिल्डिंग इज कंप्लीटेड. ठीक है, उसके बाद बिल्डर कैन नॉट प्रोवाइड, ही कैन नॉट डू एनी रिपेयर्स और एनीथिंग ऑन योर बिल्डिंग. इट मीन्स हिज सर्विस इज कंप्लीटेड नाउ. After that what he will do? He will sell those buildings. For example, I had one land, okay, now that land was empty, so I told builder to redevelop that land. तो उसने ना 10 floors का building बांधा. तो कितने floors का? 10 floors का. Now in consideration he is giving me 1 floor, तो 9 floors तो उसके हो गए. ठीक है, तो what he will do of 9 floors, he is going to sell those 9 floors. 9 floors में जितने भी flats रहेंगे he is going to sell those 9 floors. तो out of this 10 floors टिल द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जब तक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सीसी मिल रहा है उसका, तब तक वो जो भी सर्विस देगा दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस. आफ्टर सीसी इज कंप्लीटेड, या फिर जब वो कोई फर्स्ट ऑक्यूपाई कर लेता है, द फर्स्ट बायर परचेजेज इट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, ही इज ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ दोज रूम्स. अगर यस, जाता है और उससे पहले ही ट्रांसफर नहीं माना जाएगा फिर? सॉरी नहीं, ये जो सीसी मिलने के पहले अगर आप कोई भी घर परचेस कर रहे हो, इफ यू आर परचेसिंग, इफ ही इज सेलिंग एनी हाउस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. बट इफ ही इज गिविंग एनी कंस्ट्रक्शन सर्विस, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग बांध दिया, क्लब हाउस बांधने का बाकी है, ठीक है, तो इफ ही इज बिल्डिंग एनी क्लब हाउस देन दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. बट वंस सीसी इज इशूड, एंड रिमेंबर दिस, सीसी विल नॉट बी इशूड अनलेस द फुल दिस स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड. ओके, जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आफ्टर दैट सीसी विल बी इशूड. सीसी मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. मैम सीसी एक्चुअली जनरली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो दे गेट द सीसी टू अप्रूव, दे गेट इट अप्रूव फ्रॉम द दिस थिंग ना, गवर्नमेंट. Yes, they get it approved from the government, but for that structure then government comes and visits that whether your construction is going as per the structure. Okay, so government has to make sure that the CC which they have issued is the construction work is going as per the CC issued. Okay. Next is intellectual property rights. Now what are intellectual property rights? Your IPR, trademarks and stuff. So where there is a temporary transfer, okay, what the word is used here? Temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property rights. You are not transferring it completely, you are just doing a temporary transfer. You are giving your trademarks or you are giving your IPR rights to someone just for the use, for the temporary use. Later on you are going to get it back. Okay, तो जो भी permanent नहीं होता है that is supply of service.
Okay. Next is information technology software, where development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, enhancement and implementation. So any software engineer or any software company is giving these types of services, that is development, design, programming, customization, adaptation, upgradation, any version upgradation, enhancement and implementation. It will be regarded as supply of service. Okay. Next is action. What is action? Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. Example, A wants to take loan from some bank but does not have any collateral security. So A approaches B, who agrees to mortgage his property as collateral security to the bank for advancing loan to A. B charges some consideration for A for providing such collateral security. Then consideration received by B shall be covered under the scope of his entry and shall be subject to tax as a supply of service. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? A wants loan, ठीक है? A wants loan from bank, okay? But what happens? He does not have any security. Bank asks for security. Here A doesn't have any security. So what did A do? A approaches to B. He tells him that you help me with security and he will give him something as consideration. ठीक है? तो B ने क्या किया? B said yes to mortgage. So he goes to the bank. Now B is giving mortgage service. ठीक है? He has given the mortgage service to bank. He has given the securities. Means B has helped. To whom? To A. And in return A is going to give him consideration. ठीक है? A is going to give him consideration because obviously गारंटी कोई भी ऐसे ही नहीं लेगा. कल को अगर A ने पैसा नहीं दिया बैंक को, for example A doesn't pay to bank, then what bank is going to do? Bank is going to seize the securities. Whose securities are these? B का securities. ठीक है? So if A runs away, then in that case bank is going to seize the securities of B. ठीक है? So that's why B has taken the risk of mortgaging securities to bank. So in that case, A is going to pay B consideration for taking the risk. Okay. In that case, B ने जो help किया है, it will be treated as supply of service and it will be taxable. Okay. It will be taxable. Clear? Yes, ma'am. Yeah. Next. Yes, ma'am. Right to use goods. Transfer of the right to use any goods for any purpose, whether or not for a specified period, for cash, deferred payment or other valuable consideration. So wherever you are giving your goods or for the purpose of using it, in that case it will be treated as supply of service. You are not transferring the title, you are just giving the rights to use those goods. Okay. Next is composite supply. Now what do you mean by composite supply? Where goods or services are transferred simultaneously. Simultaneously means together. Now when you are purchasing AC, वो केस में क्या होता है? जब आप AC परचेस करते हो, ठीक है, you went to विजय सेल्स, you are purchasing AC, तो क्या वो AC दुकान विजय सेल्स से खरीद के घर पे आके आप खुद फिट करते हो क्या? नहीं, they sell you AC as well as they give you installation service also. Right? They are selling you AC. मतलब it is a supply of goods. Also they are giving you installation service. That means it is a supply of service. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Works contract. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Works contract. Okay? That means it is a composite supply. Composite supply मतलब where two or more goods, where two or more services, or where one good and one services are supplied together. Okay? Then in that case, supply of goods as a part of any service or in any manner, being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration. Okay. Now here what happens when you are going to restaurant? Okay. So what is the principal supply here? मतलब आप रेस्टोरेंट सर्विस ले रहे हो, दैट्स वाई यू आर गेटिंग द फूड. ओके, आप रेस्टोरेंट में गए, दे विल गिव यू रेस्टोरेंट सर्विस लाइक बैठने का, डेकोर एंड ऑल, एंड देन दे विल ऑल्सो गिव यू फूड. सो हियर यू आर गेटिंग फूड विच इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग रेस्टोरेंट सर्विस विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. सो इन दैट केस जो भी गुड्स भी ट्रांसफर सप्लाई हुआ है एंड जो सर्विसेज हुआ, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट सप्लाई. ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर इफ वी गेट टाइम वी विल डू, देयर इज अ कंसेप्ट कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई. ओके, is this clear?
Yes, ma'am. Yes. So this was supply of goods. So what was the basic motive about learning this? Because it was included in the topic supply. Supply के अंदर 5 चीजें थी, उसमें से first was with consideration, second was import with consideration, whether or not for business, third was supply without consideration. Schedule 1. Schedule 2 was there are certain transactions which are either supply of goods or supply of services. So if they are either supply of goods or supply of services, it will be regarded as supply, and if it is a supply, it will be liable to GST. Is that clear? Okay. Next, one amendment is given here. Okay, there was one circular. How is servicing of cars involved both supply of goods, that is spare parts, and services, that is labor, where the value of goods and services are shown separately to be treated under GST. So the taxability of supply would have to be determined on case to case basis, looking at the circumstances. For example, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ 4-व्हीलर, ठीक है, एंड उसका टायर खराब हो गया, ओके, एंड यू आर गिविंग योर कार टू सर्विस सेंटर, देन वो क्या करेगा, ही विल रिप्लेस द टायर एज वेल एज ही विल चार्ज लेबर ऑल्सो. ओके, सो व्हाट ही इज सप्लाइंग यू टायर एज वेल एज ही इज सप्लाइंग यू सर्विस, ठीक है, चेंज करने का, टायर चेंज करने का. ओके, सो दिस इज गुड्स एंड दिस इज सर्विस. ओके, सो इन हिज इनवॉइस, उसका जो बिल रहेगा, इन दैट बिल ही विल गिव यू दैट टायर व्हाट ही हैज रिप्लेस्ड द टायर. फॉर एग्जांपल उसका अमाउंट इज 100 रुपीज. ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. Why we are seeing different things? Because इसका टैक्स रेट अलग रहेगा से 5% एंड इसका टैक्स रेट अलग रहेगा से 18%. ओके, सो 100 के ऊपर 5% लगेगा एंड 50 के ऊपर 18% लगेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. This was about schedule 2. Okay, this was about schedule 2. Next is about schedule 3. What is schedule 3? Read. मैम ये Sorry. मैम ये PDF हमारे पास नहीं आया, आपने कहा था सेंड कर दीजिए. मैम ने किया है शेयर कल. किया. Just sent on the spreadsheet. सॉरी, नीचे आया है, स्प्रेडशीट पे है, शीट पे है, एक्सेल शीट पे. स्प्रेडशीट पे है. हाँ, ओके. सो नेक्स्ट इज शेड्यूल 3. दैट इज व्हाट इज शेड्यूल 3? क्या है, हेडिंग क्या है? Supply of neither supply of goods nor supply of services. Come on, tell me. It is neither goods nor services. Whether it is liable for GST? Very good. It is neither supply of goods nor supply of services. GST क्या है? It is a tax on supply of goods or services. Supply होना चाहिए, goods होना चाहिए, या फिर service होना चाहिए, ठीक है. बट शेड्यूल 3 में क्या बोला है, ना ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस दिए, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है. तो अगर वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? ओके, सो सी फर्स्ट क्या दिया है इसमें, सबसे पहले सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर. वर्ड्स देखो क्या दिया है, सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर. कंफ्यूज मत होना, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, गिफ्ट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई था वो. यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है, सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर. सो वॉट एवर सर्विस एम्प्लॉई इज वर्किंग फॉर एम्प्लॉयर, इट इज नॉट रिगार्डेड एज सर्विस, ठीक है. सो आप जब CS बन जाओगे, आप बड़े बिग फोर्स में या फिर जो भी बड़े कंपनीज है वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे एज एन एम्प्लॉई, एंड जो भी आपको सैलरी मिलेगा, वंस यू स्टार्ट वर्किंग एज एन एम्प्लॉई यू विल स्टार्ट गेटिंग सैलरी. तो जैसे आपको सैलरी मिलेगा तो उस सैलरी के ऊपर GST पेएबल नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप CS बन गए एंड आफ्टर दैट अगर आप फ्रीलांसर हो, कौन हो, अगर आप फ्रीलांसर हो एंड आप बड़े जो फर्म्स है उनका आप काम कर रहे हो, 4-5 फर्म्स है उनका अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो उनसे आपको जो पैसा मिलेगा दैट विल बी लायबल फॉर GST, बिकॉज वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है. बट व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अ कंपनी, वहाँ पे यू हैव एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. दैट टाइम वॉट एवर सर्विस यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉयर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड सिंस इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज नॉट लायबल फॉर GST. Am I clear? Yes. Yes.
नेक्स्ट क्या है, सी ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ director in a body established by the central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जो भी बॉडीज है विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज हो गया, फिर LIC हो गया, ऑल दीज आर बॉडीज, सेबी हो गया, ऑल दीज आर बॉडीज किसने सेटअप किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट जो भी बॉडीज सेटअप करता है या फिर लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, तो जो भी म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स वगैरह है या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन है, इफ देयर इज एनी चेयरपर्सन और देयर इज एनी डायरेक्टर, okay, there is any director, if they are not falling under the clause of employee then also they are not liable for GST, ठीक है। तो ये एज अ डायरेक्टर जो भी रेलवेज को सर्विस दे रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट हैविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दिस इज नॉट रिगार्डेड एज सर्विस, मतलब इसके ऊपर उनको टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। आया समझ में इतना? Because in GST you will come across many, there are such transactions and many there are such clauses where जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज देता है या फिर जो गवर्नमेंट के इसमें इन्वॉल्व रहता है वो मोस्टली एग्जाम्प्ट ही रहते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज GST कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम इनके रेलवेज के ऊपर ही GST लगाएंगे तो रेलवेज भी कौन है? गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को GST देगा, मतलब वो लोग आपस में ही अपना चालू रखेंगे क्या? That's why in GST you will come across many, there are such transactions where in GST so many government officials or government services they are all exempted. Okay, so क्या था सेकेंड, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन एनी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय दी, सो दीज आर द बॉडीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय, किसका है? विच आर गवर्नमेंट कंपनीज, यू कैन से ONGC हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो ये सारे क्या है? ऑल दीज आर बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। तो उसमें अगर कोई भी एज अ डायरेक्टर एज अ चेयरपर्सन है देन हिज सर्विस आर नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या? जो MPs रहते हैं, तो जो भी MPs रहेंगे, MLAs रहेंगे, ओके, ये लोग जो भी सर्विस देते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आर MPs एम्प्लॉय ऑफ अवर गवर्नमेंट? Is there employer-employee contract between MPs and government? No, ठीक है, so they are not employer and employee, but still their services are not treated as supply of service. So whatever functions are performed by members of parliament or members of state legislature, members of panchayat, members of municipalities and members of other local authorities, so whatever functions are performed by them, nagar sevak ho gaye area ke, so whatever services they are performing that is not treated as service. That's why whatever income they are earning that is not liable to GST. Understood? ओके, अगर ये सर्विस हटा दिया ना तो सारे MPs और MLAs GST ही भरते रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये कहाँ पे दिया है? शेड्यूल 3 में दिया है दैट देयर सर्विस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर इफ इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज देन इट इज नॉट लायबल फॉर GST। ओके, next is services performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitution in that capacity. In that capacity मतलब क्या? जैसे कि कोर्ट के जज हो गए, so they are holding a post under a constitution. There is a prime minister, there is a president, there is a union minister, okay, there is a defense minister, so they all are holding a post under the constitution of India, so even their income is not treated as a supply of service. Okay, next is services by any court or tribunal. The term court includes district court, high court and supreme court. So whatever services are provided by court or tribunal, तो obviously court में हम लोग जाते हैं then we have to pay court fees. Okay, तो obviously court is earning some income but their service is not treated as supply of service. तो ये high court, supreme court और ये सब district court ये सब किसके है? गवर्नमेंट के ही है, right? So obviously those services are exempt from GST. ओके, एग्जाम मतलब दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, दीज आर, इसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है
funeral, burial, crematorium और mortuary including transportation of the deceased. तो जो भी funeral services है, burial services है, तो जो whatever community or whoever is providing these funeral services, okay, so when we take a person to the funeral, even we have to pay we have to pay consideration to them because they are providing us those services, they are providing us land, they are providing the equipments what are required there, okay. So we have to pay some consideration to them. So obviously it is their income. They are giving us service. So they are the supplier. We are the recipient. But that service is exempt from GST. उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. नहीं तो मरते मरते भी GST देते जाओ वैसा हो जाएगा. Understood? So crematorium service, mortuary service मतलब क्या? Where dead bodies, वो मुर्दा घर रहते हैं, right? And transportation of the deceased. Next is sale of land. Important point, okay? Sale of land and subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2, sale of building. See, this is important point. Remember this one thing. Sale of land is exclusively removed from, it is exclusively in the negative list. मतलब it is exclusively exempt from GST. Okay, land, whenever you are selling land, there is no GST. Remember this thing. In immovable property, it was only mentioned immovable property. Here it is given subject to that clause. Okay, so sale of land is in negative list. Okay, that means it will never be liable, not liable for GST. Not liable for GST. But in sale of building, now in sale of building, remember this one thing. When you are the first buyer, ठीक है, that time GST is applicable. मतलब क्या? सी ध्यान देना, अभी जब आप फर्स्ट बायर होते हो तो आप किसके पास से परचेस करते हो? बिल्डर के पास से परचेस करते हो. So builder is selling a house to Mr. A. Now he sells house to Mr. A. So here builder is selling this house to Mr. A. तो builder कौन से intention से sell कर रहा है? In course or furtherance of business. Correct? Yes, In ma'am. course or he is selling in the capacity of in course or furtherance of business. That's why ये जो sale रहेगा, it will be liable for GST. Understood? So this sale will be liable for GST. So he is now the first buyer. That's why most of time you have seen whenever you are purchasing any house in construction, मतलब जो first time construction हुआ है, and if you are the first buyer, then you have to separately pay GST on that. Okay, but when Mr. A is selling that house to Mr. B, now Mr. A is selling that house to Mr. B, तो is Mr. A in the capacity of business? Mr. A वहाँ पे at least say 5 years रुके. Now after 5 years, Mr. A wants to shift somewhere else. That's why Mr. A is selling that house to Mr. B. So now this is not in course or furtherance of business. तो ये वाला जो sale रहेगा, इसके ऊपर no GST. Okay, only stamp duty, registration and stuff will be levied. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay, so जो land है, sale of land, it is negative list. Whenever you are selling, your first buyer, second buyer doesn't matter, ठीक है? It will always be it is negative list. मतलब sale of land के ऊपर there is no GST. But where there is a sale of building, if you are purchasing from a builder, then it is taxable. Then तो कौन tax भरता है? Who is supplier here? In this case, he is the supplier and he is the recipient. He is selling house, right? So he is the supplier and Mr. A is the recipient. Then B has to pay GST to government. But since it is an indirect tax, that's why builder collect this GST amount from us. Understood the point? Yes, monuments. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज करके है ना सब लोग नाश्ता? Yes. Yes. Any doubts? Okay. Next,
This was sale of land. Next is actionable claims other than lottery, betting and gambling. Again I said what are actionable claims? Bill of exchange हो गया, any amount of debt हो गया. So all those are, अगर तुम वो कुछ बेचते हो, अगर बिल्स ऑफ सप्लाई ट्रांसफर कर रहे हो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहे हो, देन इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. तो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग रहता है, दैट इज लायबल फॉर जीएसटी. ओके, सो वॉट एवर इफ लॉटरीज आर मोस्टली सोल्ड बाय गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट जो लॉटरी सेल करता है दैट इज लायबल फॉर जीएसटी. अंडरस्टूड? एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज ऑल्सो लायबल फॉर जीएसटी. इज दैट फाइन? Next, supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without such goods entering into India. Example, there is Mr. A. Okay, now Mr. A has very good business, very huge business and very nice international contacts. ठीक है, he got a order from Mr. C, say China. ठीक है, he stays in Chandni Chowk. Where does Mr. A stays? In Chandni Chowk. ठीक है, that is in Delhi. Now he has a party, that is Mr. C in China. Now Mr. C told Mr. A that he wants say 100 kgs of pulses. He wants 100 kgs of pulses. ठीक है. Now Mr. A के पास तभी नहीं है, तो Mr. A क्या करेगा? Import करेगा. तो Mr. A will order Mr. B who is in say Tanzania. Who is in Tanzania. Now this is outside India. This is India and this is also outside India. Now tell me, if Mr. A will have brain, then what will he do? Mr. A के पास दिमाग है तो Mr. A क्या करेगा? तंजानिया से चांदनी चौक, फिर चांदनी चौक से चाइना. क्या करेंगे? तंजानिया से गुड्स किधर जाएंगे? चाइना. सो दिस मिस्टर ए ऑर्डर्ड टू सप्लाई गुड्स टू चाइना. नाउ दीज गुड्स आर गोइंग टू फ्रॉम तंजानिया टू चाइना. तो जीएसटी इज लेविएबल इन इंडिया ओनली. जीएसटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया. इंडिया का जीएसटी इंडिया में ही रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. दिस इज कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. अभी रीड करो क्या दिया है. सप्लाई ऑफ गुड्स. दिस इज माई सप्लाई ऑफ गुड्स. Supply of goods from a place in a non-taxable territory, from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without entering into India. Without entering into India. तो ये जो सप्लाई हुआ है वो क्या ट्रीट किया जाएगा? Neither supply of goods nor supply of services. So this will be neither supply of goods nor supply of services. So if this transaction, ये जो transaction हुआ है goods का, if it is neither supply of goods nor supply of services, तो वो क्या माना जाएगा? Will it be liable for GST? No GST. मतलब मिस्टर A को ये वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर GST भरने का जरूरत नहीं है. Am I clear? Yes, ma'am. Everyone? Okay. Next, supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption. Now see, जो भी goods, shall I rub this? Yes, ma'am. Okay. Okay, next, supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption. Now समझो कि जो भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट इंडिया के अंदर जो भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो वो डायरेक्टली अपने होलसेलर के पास या रिटेलर के पास नहीं आ जाते. वो कहाँ पे रहते हैं? दे आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस. वेयर दे आर स्टोर्ड? They are stored in warehouse and from their warehouse they are transferred for personal consumption. So for example, there is again
सेम मिस्टर, बहुत बोर हो गया अभी. मिस्टर जेड, there is Mr. Z, okay, he has a factory say in Lucknow, he has a factory in Lucknow. Now he is importing some pulses, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. तो अभी लखनऊ में तो कहीं पे पोर्ट वगैरह नहीं है, सो इसके जो पल्सेस है ना वो कहाँ पे आए. दिस पल्सेस केम टू मुंबई बाय सी, मुंबई पोर्ट बाय सी. नाउ दीज ये जो पल्सेस है दे आर इम्पोर्टेड टू मुंबई पोर्ट बाय सी. नाउ व्हेन दे आर इम्पोर्टेड दे हैव टू बी केप्ट इन वेयर हाउस. फिर वो कस्टम ड्यूटी भरेगा, बाद में वो अपने फैक्ट्री पे लेके जाएगा, ठीक है. सो दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस, now from warehouse when they will go to factory, this supply is not treated as supply. मतलब वेयरहाउस में सिर्फ स्टोर करके रखे हैं, उसके बाद अभी उसके पास डायरेक्टली तो लखनऊ नहीं आ जाएंगे, तो वेयरहाउस में है, वेयरहाउस से उसके फैक्ट्री में आएंगे, फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होंगे एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दे विल गो फॉर होम कंजम्पशन. होम कंजम्पशन मतलब क्या, खुद के घर पे नहीं, टू होम कंजम्पशन मतलब क्या, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर जहाँ पे भी उसको सेल करना रहेगा, उसको सप्लाई करना रहेगा, ठीक है. सो हियर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयरहाउस टू अ प्लेस, बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. होम कंजम्पशन के पहले वो जहाँ पे भी सप्लाई हुआ है, दैट सप्लाई विल नॉट बी ट्रीटेड एज, इट विल नीदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yeah. Okay, then last point, supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before the clearance for home consumption. So it will neither be treated as goods nor supply of services. Now same ये वाला जो example था वही, यहाँ पे क्या होता है, document of title. Now supply of goods by the consignee. For example, there is Mr. Z and there is one Mr. X. ठीक है, Mr. Z ने क्या किया है, import किया, Mr. Z ने import किया पल्सेस. मिस्टर जेड ने क्या किया, इंपोर्ट किया पल्सेस. तो यहाँ से मुंबई है, मुंबई पोर्ट पे वो गुड्स आए, पल्सेस आर इंपोर्टेड, ठीक है, पल्सेस आर इंपोर्टेड एट मुंबई पोर्ट. नाउ इंपोर्टेड, सो दे आर केप्ट इन वेयरहाउस, स्टिल दे आर केप्ट इन वेयरहाउस. नाउ व्हेन दे आर केप्ट इन वेयरहाउस, अब इसको कोई तो छुड़ाने को आना चाहिए ना, पोर्ट पे आएंगे, माल छुड़ाएंगे, कस्टम ड्यूटी भरेंगे, उसके बाद वो लेके जा सकते हैं गुड्स, ठीक है. तो जेड ने इंपोर्ट किया था, ओके. ये बात हुआ था ऑन फॉर एग्जांपल 3rd June 21 को. नाउ ऑन 3rd June 21 गुड्स आर हियर, बट बिफोर क्लियरिंग इट ओनली मिस्टर जेड सोल्ड दीज पल्सेस टू मिस्टर एक्स. किसको बेच दिया, मिस्टर एक्स को, से ऑन 1st June 21, कभी सेल कर दिया ऑन 1st June 21. मतलब व्हेन दिस गुड्स वेर इन ट्रांजिट और गुड्स माइट हैव रीच्ड द वेयरहाउस बट दे आर नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अभी तक वो पोर्ट पे ही है, दे आर इम्पोर्टेड एंड दे आर एट पोर्ट. मिस्टर जेड ने क्या किया, देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या, कि ये जो गुड्स है उसका टाइटल मेरे पास है, वो क्या रहता है, वो उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. सो द गुड्स मेंशन इन दैट डॉक्यूमेंट, आई हैव द टाइटल ऑफ दोज गुड्स एंड दोज गुड्स बिलोंग्स टू मी, ठीक है. तो मिस्टर अब वेयरहाउस में इंपोर्ट हुआ है, तो ये जब व्हेन ही विल गो टू रिलीज दोज गुड्स, दैट टाइम कस्टम्स ऑफिसर विल आस्क दैट गिव अस द प्रूफ दैट दिस डॉक्यूमेंट इज योर्स, देन ही विल शो दैट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. बट yes, still people are there to join. Where are other people?
There is a batch of 19, right? 18 or 19. Only 11 are there. चलो, let us start. Now those who are present, let us think those who are late comers उनको क्या punishment देना है. 13 हो गए ना? 13. चलो. On my screen first I can see is Venki. Venki, is that your real name? Yes. Oh, background and all, Nimisha, nice. Okay, I think Venki is not there. Next is Pooja. Yes, Pooja. Even Pooja is not there. Latecomers. Pooja, Hazel, Nimisha. Oh, hello Hazel. Yes, very good. Where is Amar, Venki, Pooja, Zara, Yash? Yes, ma'am. Yes मैम क्या yes मैम? क्या बोला था ब्रेक के पहले? क्या सब लोग कितना खा रहे? तरुण, श्रुति, हम सब टच अप. what if I would have started lecture? Venki? Wash my face. Acha. Oh, so you wanted to get an impression on girls, that's why you went to wash your face? Not like that. Why you didn't bath today or what? Yes, Shruti. I should have started lecture. Let them would have lost on the portion. कल सब लोग टाइम पे आ गए थे. आज सबको बोला कैमरा चालू करने का, सब आराम आराम से आ रहे तैयार होके. Yes, Khushi, are you there? The first person I can see on screen, that is Venki, and he only is not present. Yes, chalo, let's begin. Remember, this Venki is late, okay? So we have to give him some punishment. Hazel, are you there? हाँ, there, बच गई. Yash, Yash Doshi, are you there? Okay, Yash is also late. Chalo, I got 2 bakras. Then Khushi Agarwal, are you there? 3. Next, Zara, you have 2 IDs. There is Zara Sheikh. I can see 2 Zara Sheikh. Okay. Yeah. So Khushi, Venki, Yash, Shraddha ma'am, are you there? Shraddha ma'am is also not there. हाँ, there. Yeah. Yes, Bhaveshri. Yeah, yes, Bhaveshri. I am just calling out the names, those who are whose cameras are not there. Cameras are not on. Yes, Pooja, come on, start. We will start with you. Yes, Pooja, introduce yourself to everyone. I want everyone's camera on to be on, okay? No one is going to off their camera. सब लोग जो भी नींद में है, सब लोग उठ जाओ. We have 2 culprits, that is Venki and Yash Doshi. Decide some punishment for them. They are going to get some punishments. Okay, chal, come on, start Pooja. Still there are only 13 members. There are 19 students in the group. After break, some students left. I don't know whether they are not interested in MCQs or they are not interested in this. Chalo. Yes, Pooja, start. Introduce yourself. I am picture perfect Pooja. Oh, Very nice. much interested in photography. And I am from Jamshedpur, Jharkhand. Okay. What are your short-term goals?
short term goal भी और long term goals भी यही है कि lots of knowledge, skills. Okay, great. Next is Hazel. Yes, Hazel. Introduce yourself. Actually, my name is Rutuja. Hazel is my second name. Okay, Hazel is your second name. Pooja, your introduction is over. It doesn't mean you will off your camera. Everyone was seeing you. You also have to see everyone. Okay? Yes. My name is Rubina. I'm a freshers refugee. Okay. My second name is Rubina. And I'm from Goa. You are from Goa. Oh, nice. Very cheap excise duty on alcoholic liquor for human consumption. Yes. Yeah. And my short-term goal would be like, I'm working under a CA right now. Okay. So my goal would be like to get more experience. So you are working also and you are pursuing your CS also. Yes. Yes. Okay. Very nice. Good. And long-term goal would be, yes, definitely to become a CA and open my own office in Chennai. Okay. Great. Next, Bhavyashri. Yes, Bhavyashri. You are not audible, beautiful Bhavyashri. Louder. Little bit louder. Am I audible, ma'am? Yes. I'm from Kerala. You are from Kerala. Postgraduate. Okay. Next is Shruti. Yes, Shruti. It is audible, ma'am? Yeah, it is audible. Yeah, my name is Shruti Sawant, and right now I'm doing with BCom. Adjective. Adjective. It is compulsory to. Yes, it is. Adjective from S which can describe you. Okay, smart Shruti. Oh, nice. Okay, right now I'm doing BCom and BCom with CS. I'm in second year. Okay, from which college are you? I'm from in Mumbai, and my college is from SIS in Science. Oh, even I am from SIS college. Yeah, I'm from in Commerce and Economics. Yeah, same. Even I am from SIS Commerce and Economics. Chalo, mutual connection. Nice. Yeah, and my long-term goals is I want to be a lawyer. Okay, great. Next, Shraddha ma'am. Yeah, I should say spirited Shraddha, Okay. and I'm from New Delhi, Okay. and I'm actually a professional, Yeah. and I'm an MBA professional. Okay. And the short term is like I want to go for dinner first, and long term is like I want to edit myself as a professional, so I want to edit in my career. Okay. That is it. Next is Yash. Yash is not there. Next, Amar. Amar is also not there. Yes, Bhanu Pratap. Your turn. Hello. Yes. Hello everyone. Hello. My name is Billionaire Bhanu Pratap Singh Sanger. Oh my god. That's very nice. I am from Bikaner, Rajasthan. Okay. And my short-term goal is to have dinner. Okay. And long-term Long-term goal goals? is club. What are your long-term goals? Long-term goal is to I want to open a club. You want to open a club. Open a club. Yes, next is Tarun. Yes, Tarun. The Bakra of our house. Hello everyone. Yes, Tarun. Hello everyone. Hello everyone. Hello. Sorry, continue. I am comedian Tarun. We didn't get you. Comedian Tarun. Comedian Tarun. Yes. Oh, okay. So you should tell some joke to us if you are a comedian Tarun then. फंस गया. You are, I don't know Hindi man. Telugu there. Acha, you are a Telugu. Okay. Everyone will understand English. You can tell a joke in English.
but I don't know in English. Okay, no problem. So your homework will be in tomorrow's lecture. You are going to tell a joke. Okay, that will be homework for you. Yes. Where are you from? I am from Andhra Pradesh, Okay. and I completed degree, and I did 2 years job in Bangalore. Okay. My short-term goal is to complete CS, and my long-term goal is to complete CS within time. Complete CS in within time. Okay. See, we have so many different people from different areas and all. Okay. And in the today's world, the most important thing is networking. Don't forget this. The thing which is going to be more and more beneficial to you is networking. Okay. If you would have joined any normal classes, then would you have been able to interact people from other states and all, to learn, to know about them, to know them. Now in next session or after 1 week or so, we will keep something like that everyone has to tell something about their state. Okay, because it's not necessary that everyone will know each other. Okay, next, Amar, why are you late? Ma'am, actually, You also went to wash your face? no, ma'am. I'm working with CS and coaching. Okay. My short-term goal is complete CS, और my long-term goal is open business. You want to open your own firm, right? A consultancy firm of CS. Okay. चलो, थोड़ा तो interaction हुआ. Now we have 3 people. One is Venki, one is Yash, and one is Khushi. Are you there? Khushi is also not there. Okay, so we have 3 people who are there in the group, who are there in the meet. Okay, so think some punishment for them. Tomorrow they have to pay for it. Yes? Maybe 3. No, I told Venki, Yash and Khushi. Okay. 3. Okay. Now there are only 13 people out of 19. Chalo. So this was a short introduction, a short jam up for you all. Okay, I hope everyone will get comfortable with each other, so that if you have any doubts, you don't hesitate to ask each other. If you have missed any lectures, you can ask each other. Okay, so this is very important during this meets, because there is no physical interaction. When there is physical interaction, you can meet a person physically, then it is quite easily possible to gel up with everyone. Online सब सोचते हैं कि कौन कैसा रहेगा, कैसे बात करने का and stuff. So we need to know each other kind of. Okay, चलो let us revise once that पूरा supply का scope. ठीक है, पूरा एक बार सप्लाई रिवाइज कर लेते हैं सब लोग. सप्लाई रिवाइज कर लो. It's around still, it's only 8:35. चलो, our lecture is still 9 today. Okay, so let us revise once supply, then we move on to the MCQs. Okay, चलो, what is supply? सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने? Supply के अंदर there are 5 elements. What are those 5 elements? First is supply with consideration. Second is import of service with consideration, whether or not for business. Third was schedule 1, schedule 2 and schedule 3. Now what is first supply with consideration? What is supply with consideration? There should be 3 elements. First में क्या आएगा? Supply. Supply includes sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, deposit. ये कोई भी तरह का transaction जाएगा, हम उसको supply मानेंगे. There should be with consideration. There should be consideration. And third should be, it should be in course or furtherance of business. ये 3 elements है. सॉरी, इट इज रिगार्डेड एज सप्लाई एंड देयरफॉर हम उसको सप्लाई बोलेंगे. नेक्स्ट क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में भी है एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में भी है. दोनों में क्या डिफरेंस है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी वाला है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन वाला है, एंड जो शेड्यूल 1 में है वो Okay, जो section 7 subsection 1 clause B में, that is import of service with consideration. In schedule 1 it is without consideration. So whether it is for business or whether it is without business, whether it is in course of business or whether it is not in supply without consideration. So generally our transaction, for a transaction there should be a consideration, but government has mentioned that 4 types of transactions which are there in schedule 1, but they are without consideration, but still those 4 transactions will be regarded as supply. What are those 4 types of transactions? First is permanent transfer or disposal of business asset on which ITC has been claimed. Second is supply between principal and agent. Third is supply between principal and agent, which is the third one. Supply between related or distinct person.
okay, in course or furtherance of business. And fourth was import of service without consideration, but it should be from related person or distinct person. Whenever you see import of service, you have to remember that chart. You have to identify, पहले देखने का import of service है क्या? Yes, import of service है. उसके after that you have to see whether it is with consideration or whether it is without consideration. If it is with consideration, then whether it is for business or not for business, it will be taxable. But if it is without consideration, then you have to see it should be from related or distinct person, and plus it should be in course or furtherance of business, then only taxable, otherwise it is not taxable. Okay. Next we have seen, that was about schedule 1. Next we have seen schedule 2. What is given under schedule 2? Supply of either supply of goods or supply of services. ठीक है, या तो goods है या तो service है, ऐसा वहाँ पे लिखा है, करेक्ट. सो उसमें अगर goods भी है या फिर service है, then it will be treated as supply. If it is either goods or services, it will be treated as supply. And schedule 3 में क्या दिया है? schedule 2 में majorly क्या क्या थे? What were the major? If you are supplying title, if you are supplying title of goods, then it is supply of goods. If you are just supplying mere rights to use those goods, then it will be treated as supply of service. Okay. Then we have seen immovable property, construction, intellectual property rights, transfer of business assets, then treatment or process, that packing material wala part, transfer, if you are transferring any generator to someone for use, then you are just transferring the rights. Okay. Then we have seen schedule 3. Now in schedule 3, it is called as negative list. नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. इफ इट इज नॉट गुड्स नॉर सर्विसेज, तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा? इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. एंड इफ इट इज नॉट सप्लाई, देन नो जीएसटी. ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या था? सर्विस फ्रॉम एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर. क्या है? सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर. तो वो जो ट्रांजेक्शन रहेगा, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई, नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. नेक्स्ट इज ड्यूटीज परफॉर्म बाय पर्सन, चेयरपर्सन, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो जितने भी लोग रहेंगे, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. देन फंक्शंस परफॉर्म बाय जो भी एमपीज, एमएलएज, पंचायत समितिज, जो भी हेड्स रहते हैं, इफ दे आर परफॉर्मिंग एनी सर्विसेज, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. इट मीन्स ऑन देयर सर्विसेज जीएसटी इज नॉट पेबल. देन ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन इन पोस्ट और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी. कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी मतलब whoever is holding position in that capacity, that is president, prime minister, any union finance minister and all that. Okay, so that will not be regarded as service. Then we have seen services by court or tribunal, if there is any court or tribunal, funeral, burial, crematorium, mortuary services, sale of land. Sale of land is in negative list. On sale of land, no GST is payable, but on sale of building, if you are a first buyer, then land is payable. Next is actionable claims, no GST, but actionable claims other than lottery, betting and gambling. मतलब in case of lottery, betting and gambling, GST is payable. Okay, in case of lottery, betting and gambling, GST is payable. Other actionable claims, no GST. Supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in a non-taxable territory. What example we have taken? That Chandni Chowk to China wala. Okay, so in case of Chandni Chowk to China, pulses were coming from Tanzania. So from Tanzania, pulses came to China. So without entering into India, the pulses were transferred from Tanzania to China. So on that transaction, no GST. Supply of warehouse goods before the clearance of home consumption. Goods are in warehouse. Now from warehouse, they want to supply to the factory. So this supply of goods from warehouse to factory, it will not be regarded as supply of goods or supply of service. Next is supply of goods by a consignee to any other person by endorsement of document of title. So we have seen that before clearance for home consumption only, Mr. Z sold those goods to Mr. A through document of title. So that will not be regarded as supply. Okay, is that clear? Everyone? Yes. Chalo. Let us solve some MCQs. All are there? Okay. Yes. This MCQ will, this PDF will also be shared with you. Okay. See, MCQs in exams look like this. Now you have to find which is the correct answer in this. Okay. Yes, ma'am. Chalo. We see, in this chapter there are three concepts. There is a supply, there is composition levy, and there is exemption. ठीक है. So first we have done the supply. So we will solve MCQs on supply. क्या है?
What are different types of supplies covered under? चलो everyone with me, okay? Unmute yourself and try to solve. मन का मन में नहीं आंसर देना है, फिर ऐसा नहीं बोला हाँ देखा करेक्ट था, मैंने बोला था करेक्ट था आंसर, वैसा नहीं, ओके? चलो. What are different types of supplies covered under the scope of supply? Supply made without consideration, supply made with consideration, both A and B, none of A and B. Both A and B. Both A and B, that is supplies with consideration are also included and without consideration are also included. ठीक है. The activities to be treated as supply of goods or supply of services are referred in GST in which schedule? Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 or Section 8? Treated as supply of goods or supply of service. It means they are either supply of goods or supply of services. ऐसा कहाँ पे लिखा है? Schedule 3. No, Schedule 2. In Schedule 3 it is neither supply of goods nor supply of services. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है? The activities to be treated as supply of goods or supply of services. So in that case it is either goods or service. This is defined under Schedule 2. Okay. Next, supply of goods. Supply includes import of service for consideration. Remember, supply includes import of service for consideration in course or furtherance of business, not in course or furtherance of business, whether or not in course or furtherance of business, none of the above business. Whether or not in course of See, business. very good. Whether or not in course or furtherance of business. So supply includes import of service for a consideration. For a consideration है, then whether or not for business, it will be treated as supply. Next, activities made or agreed to be made without a consideration are covered in the scope of supply. Are specified in which schedule? Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 और Section 8. मतलब सब जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं विदाउट कंसिडरेशन दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई. ऐसा कौन से शेड्यूल में लिखा है? Schedule 1. Schedule 1. Very good. It is specified in Schedule 1. Okay. Next, activities or transactions specified in dash shall be treated as neither supply of goods nor supply of services. Schedule 3. Schedule 3. It is specified in Schedule 3. 3. Okay. Next is which of the following cases is composite supply? That वो अपना पार्ट बाकी है. Okay. Next you have this transfer of title in goods. Transfer of title in goods should be treated as supply of goods, neither as supply of goods nor supply of service. Supply of service, either supply of goods nor supply of service. ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स क्या ट्रीट किया जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स. Transfer of right in goods or undivided share in goods without the transfer of title shall be treated as dash. Transfer of right in goods is supply of goods, neither supply of goods nor supply of service. Supply of service either as the supply of goods or supply of service. Supply of service. ठीक है. Powers to declare certain activities or transactions as neither supply of goods nor supply of service are given under which schedule? Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 3. Schedule 3. Next, transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon the payment of full consideration as agreed dash. Supply of goods nor supply of goods or services. क्या रहेगा? Supply of goods. ठीक है. Any lease, tenancy, easement, license to occupy land. Supply of goods, neither supply of goods nor supply of service. Supply of service. क्या रहेगा? Supply of service. Any lease or letting out the building, including a commerce, either wholly or partly, is commercial, industrial or residential complex for business, is to be treated as supply of goods, neither goods or service. Supply of service, either supply of goods or service. Supply of service. It is any lease or letting out of building. Lease or letting out of building हो गया, मतलब क्या हो गया वो? Supply of service हो गया. Any treatment or process which is applied to another person's goods. Supply of service. इसमें क्या एग्जांपल लिया था हम लोग ने? वो पैकेजिंग वाला, राइट?
ओके सो ट्राई टू रिकलेक्ट, जैसे जैसे कंसेप्ट आप पढ़ते जाओगे ना, तो वॉट एवर इफ एग्जाम्पल्स आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, ये A to B, B to C वाला जो भी है, ट्राई टू नोट इट डाउन ऑल दोज कंसेप्ट, ओके, इन योर नोटबुक ऑल्सो, सो दैट व्हेन यू विल रिवाइज दैट कंसेप्ट, वो एग्जाम्पल देख के यू विल रिकलेक्ट कि क्या एग्जाम्पल था, एंड देन अगर कंसेप्ट नहीं भी स्ट्राइक होता रहेगा देन यू विल रिमेंबर. Okay, where goods forming part of the assets of a business are transferred, where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by under the direction person carrying on the business as carrying on the business so as no longer to form part of the business. मतलब in short क्या कर रहे हो आप, where the goods which are part of your business, now you are disposing of that business, disposing of this goods, of that goods, आप वो goods बेच रहे हो, ठीक है, तो वो किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो by the person, then is it supply of goods nor service, supply of service, या फिर either goods or service, सप्लाई ऑफ गुड्स, आप जो आपके जो एसेट्स, जो बिजनेस एसेट्स के जो गुड्स है वो आप बेच रहे हो, ठीक है. वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर दैट पर्पज ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज और आर यूज्ड or made available to any person for use for any purpose other than a purpose of business, the usage or making available such goods is goods or service neither either goods or service. क्या रहेगा इसमें, बार बार क्या वर्ड यूज किया है, यूज वर्ड यूज किया है, ठीक है. वेदर यू आर गिविंग दैट बिजनेस एसेट फॉर यूज, फॉर यूसेज ऑफ पर्सनल यूज एंड स्टफ, देन इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स नीदर गुड सर्विस या फिर इधर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग आ गया तो क्या रहेगा वो, सप्लाई ऑफ सर्विस. yes, सप्लाई ऑफ सर्विसेज. temporary transfer of permitting the use or enjoyment of any intellectual property right, क्या है, गुड्स है या सर्विस है या फिर कुछ भी नहीं है, सर्विस है. टेम्पररी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, नॉट परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर. देन डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, व्हाट इज, इट इज सर्विसेज. देन एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, इसमें क्या आएगा, गुड्स और सर्विस, सर्विसेज. इसमें कौन सा एग्जाम्पल था, वो मॉर्गेज कोलैटरल सिक्योरिटीज वाला एग्जाम्पल था, याद है, उसको बैंक से लोन चाहिए था, he didn't had collateral securities, that's why he approached to Mr. B who can take the collateral securities, so he gave the guarantee. When he is giving the guarantee, it is in the form of a service, he is taking the risk, ठीक है, so he is giving a service Against the consideration, no? yes, against the consideration he is giving that service, he is taking the risk, so he is agreeing that okay, if you don't pay then I am giving my securities to the bank, ठीक है, so it is a kind of a service. Transfer of the rights to use any goods for any purpose, whether or not for a specified period. So transfer of the right to use any goods रहेगा तो क्या आ जाएगा, supply of service. Supply services. Works contract, so works contract being composite supply shall be treated as works contract. जैसे हम लोग ने बोला था, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, food is also transferred and restaurant service is also transferred, so in that case it is a supply of service. Works contract under GST is goods used in working relating to immovable property, both movable and immovable property treated as supply of service and immovable property treated as supply of goods, so it is immovable property where it is treated as supply of service. Okay. IGST deals with dash composition scheme. Okay, ये आपका नहीं हुआ है, हाँ. नेक्स्ट, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक लिकर, वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. क्या था ये, जो हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वेयर इन रेस्टोरेंट्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्विसेज. हाँ, सी ऊपर क्या दिया है, सप्लाई बाय वे ऑफ or as a part of any service or in any other manner whatsoever. So we are going there for service. Restaurants are in service industry. Restaurants जो होते हैं वो किस में होते हैं, they are in service industry. So we are going there to avail the service.
But in course of that service, these industries, they are providing us food or any other human consumption or any drink. So that will also be treated as supply of service. Okay. Next, supply of goods by an unincorporated association or body of persons or member thereof for valuable consideration is supply of goods. Starting में ही दे दिया है. Next, services by an employee to employer in the course of or in relation to his employment. Goods है, goods या सर्विस दोनों नहीं है, सर्विस है या फिर या तो goods या तो सर्विस. Neither as supply of goods nor as supply of services. This is a negative list का item. Correct? Schedule 3. Very good. Services by any court or tribunal established under any law. Goods है, goods या service दोनों नहीं है, service है या फिर goods और service. It is neither goods nor, or these are negative list items. Schedule 3 items. The functions performed by MPs, MLAs, members of panchayat, members of municipalities. It is neither goods nor services. Is everyone with me? Yes, ma'am. Yes. Next, the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution. Constitution मतलब क्या? CM हो गए, PM हो गए, all those are holding post as per the Constitution. So they are also neither goods nor services. The duties performed by any person as a chairperson or a member of a body established, it is neither goods. All these are negative list items. Activity of funeral, burial, crematorium, actionable claims other than lottery, betting and gambling, neither. Gifts not exceeding in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. What is the amount? 50,000, 1 lakh, 5,000, 1 lakh 50,000. What it is? 50,000. The dash shall be treated as supply even if it is made without consideration. The dash shall be treated as supply even if it is made without consideration. ऐसे कौन से items है? How many such transactions are there which shall be treated as supply even if it is without consideration? 4 types of transaction. Related to Four types of transactions are there, right? Now we have to evaluate the options. What is given? Permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed on such asset. Permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has not been availed on such asset. Both of above, none of above. Which is the correct answer? कुछ नहीं. है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ए आएगा. कुछ नहीं किसने बोला? कुछ नहीं से याद दिया यहाँ पे. द डैश shall be treated as supply even if made without consideration. तो even though without consideration है but फिर भी हम उसको supply बोलेंगे. ऐसे कितने items है? कहाँ पे दिया है without consideration वाला? Schedule 1 में. Correct? Schedule 1 में there are 4 types of items. उसमें first item क्या है? Permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been claimed on such asset. Correct? So the correct answer is A. Understood? Yes, जिसने कुछ नहीं बोला था. Dash shall be treated as supply even if made without consideration. Supply of goods by a principal to his agent where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal या फिर supply of goods by an agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. First option में क्या है? Supply of goods by principal to agent. Second में क्या है? Supply of goods by agent to principal. तो Schedule 1 के अंदर both are covered. Whether principal is giving to agent or agent is giving to principal without consideration, it will be treated as supply. ठीक है? Third option क्या है? Both of above and none of the above. Which is the correct answer? Both of above. क्या? Next again same dash shall be treated as supply even if made without consideration. Supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods behalf of principal. Supply of goods by agent to his principal. And third option is permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed on such asset. All of above. Which is the correct answer? All of above. All the above. Oh, कौन था ये? तरुण. Import of service by at 9 बजा की बराबर आवाज निकलता है आंसर देने के लिए. Import of service by a taxable person
from a related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business shall be not be treated as supply of service, be treated as supply of service when made with consideration, be treated as supply of service even when made without consideration, be treated as supply of service. See, किसके पास से आ रहा है? Remember the chart. Import of service. Import of service यहाँ पे टॉप पे था. Import of service इसमें दो पार्ट्स था. ठीक है? Import of service. without consideration. हाँ, with consideration, without consideration. Right? Without consideration में कौन था? Related plus business. And यहाँ पे था others. तो this will be taxable. Correct? तो उन्होंने क्या बोला है? Import of service हो रहा है by a taxable person from a related party. किसके पास से हो रहा है? From a related party. तो कभी taxable होगा related party से? It will be treated as supply when it is made, even if it is made without consideration. Understood? Yes. We do 2 more MCQs, then we stop. Okay? 40 तक करते हैं. Next, example for supply of goods in which possession of the goods are transferred but title on the same will be transferred at a future date. कौन सा example, मतलब which is the correct example? Normal sale of goods. Understood the question? Where possession is transferred on the spot, but when title is transferred at a future date. So which is the correct option? Normal sale of goods, sale on approval basis or hire purchase, rent a car, none of the above. B, sale on approval basis or hire purchase. Next, example for supply of goods in which possession of goods is transferred but the title of goods is not transferred. Okay, I guess same question है. Same है question दोनों. ठीक है. Title of goods is not transferred at all and thereby attains the character of supply of service. Then normal sale. Okay, sorry. Example for a supply of goods in which possession of goods is transferred but title of goods is not transferred at all and thereby attains the character of a supply of service. तो यहाँ ऊपर क्या था? Title is transferred on a future date. ये example में क्या है? Possession is transferred but title of goods is not transferred at all. ठीक है. तो व्हाट आर द ऑप्शंस? नॉर्मल सेल, सेल ऑन अप्रूवल और हायर बेसिस, रेंट अ कार और नन ऑफ द अबव. रेंट अ कार. बिकॉज देखो नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स में भी टाइटल ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाता है. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या हायर परचेज में क्या होता है? पोजेशन अभी मिलता है लेकिन टाइटल बाद में मिलता है, बट यू गेट अ टाइटल. क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड एट ऑल. सो टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड इन रेंटिंग अ कार. करेक्ट? चलो, there are more examples. Okay, homework remains same. Everybody study and come. Tomorrow revise and come. We will solve more MCQs. Okay? Yes. Yes. Chalo. Bye everyone. Bye. Bye.